तो हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँच आप बहुत भलरे थे। तो सेमिस्टर 4 रे किसी देखूँ तो आम सब रही देखूँ कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इनक्लूसिव एजुकेशन रही एनवायरमेंटल एजुकेशन रही। देखो ये 40 मार्कर थियोरी अच्छी आउ 10 मार्कर प्रैक्टिकल रही देखिपे। टोटाल आमर मार्क फुल मार्क हो 50 मार्कर है। तो देखिपे किंतु मुगुड़ाकर देखो टोटाल आमर 160 मार्कर एग्जाम हबार अच्छी। आचार्य नागार्जुन अंडर जो मैंने योगी विमान अंडर जो मैंने कर आंध्र केशर यूनिवर्सिटी अंडर जो मैंने कर तो से आज मु नोट नहीं आसी। तो चलतु आज मुझे 40 मार्क अनुसार जोटा कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन उपर मुझे डिटेल्स से कहीदेवी। मुझे अनुसार नोट करी बेसी पढ़े कम पढ़े। देखो जो अनुसार नोट प्रिपेरेसन करी से अनुसार करेंगे जमी आप 90% ऊपर रखिए मार्क। ओके तो चलतु देखी ना आमर कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन उपर कौन मु नोट प्रिपेरेसन करी। चैप्टर 1 पाखु बेसी पढ़े बहुत कम पढ़ी केमी भलरे लिखे से विषय में आलोचना करदेवी। तो चलतु थे आमर यहाँ रही माने कंटेम्पोरारी उपर आम जा फास्ट चैप्टरटा देखने केमती माने नोट प्रिपेरेसन करी से अनुसार मुझे माने कहूँ केमी माने अधिक पढ़ा अपेक्षा आप कहीं नोट अनुसार न पढ़ी कहीं भल मार्क न रखिए। केवल नोट अनुसार पढ़ो आपंकर ए यूनिट अनुसार जो क्वेश्चन पढ़े आप ही लिखिदेवे कि देखिए बहुत भल मार्क ही आसो। देखो नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन उपर जो मु नोट प्रिपेरेसन करी देखिपे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक फीचर आप हेडिंग लिखिदेले जदि पारे भी इंट्रोडक्शन भी लिखिकी एटा लिखिए है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ए गवर्नमेंट। इट डिफाइन्स द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड एस्टेब्लिशिंग द फ्री structure, procedure, powers and duties of a government. The Constitution of India is the world's longest written constitution with 395 articles and 18 schedules. Okay. तो देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय ए कमिटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ B.R. Ambedkar as its chairman. It took 2 years 11 months and 18 days for its completion. The new constitution was adopted and signed by the President Dr. Rajendra Prasad on 26 November 1949 by the Constitution Assembly and is fully applicable since 26 January 1950. The Constitution Assembly had been elected for undivided India and held its first sitting on 19 December 1946, reassembly on 14 August 1947, the Dominion of India. The word federal is now here used in the Constitution of India. Article 1 merely states that India, that is Bharat, shall be a union of states. देखो गोटे आमर फास्ट ये रहीगला आ गोटे हेडिंग देखो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एमती करदे। देखो ब्लैक ब्लू पेन यूज करेंगे एमती करदेवे तेरे मैंने जमी लुक मैंने देखा भल। इंडियन फेडरल सिस्टम इज क्वासी फेडरल। इट इज फेडरल इन इट्स फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन इट्स स्पिरिट। सेंटर स्टेट रिलेशन आर एज फॉलोस: लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव आइटम्स: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, थर्ड रे कॉन्करेंट लिस्ट। ओके यूनियन लिस्ट कंसिस्ट of 100 subject of all India importance. Most important subject in the union list are defense of India, naval, military and air force, atomic energy, foreign affairs, railway etc. देखो तो बी रे रेसिडुअरी पावर विथ द यूनियन. ऑल द सब्जेक्ट एंड पावर आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट इन USA and Australia. The residuary powers are left to the states and not to the union. 3 देखो power of parliament to legislate on state list in the national interest. Union can pass a law on any of the subjects of the state list. Rajya Sabha passes a resolution supported by a majority of 2/3 members present and voting to the effects that in the national interest. देखो डी रे नेशनल इमरजेंसी. यूनियन पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू पास ए लॉ ऑन ए सब्जेक्ट इन केस ऑफ emergency. The Indian constitution become unitary. Third, on request from state, the union can pass law on the state list 2 or more state legislature. Such a law is valid for a period of
1 year इंटरनेशनल ट्रिटीज एंड एग्रीमेंट ड्यूरिंग देखो एफ रेटा हूँ सब देवे आप सब ये करके देवे एफ रे देवे जी रे देवे नंबर करके देवे ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल देखो आमर ये अच्छे पावर ऑफ पार्लियामेंटारी टू लेजिस्लेट फॉर्म यूनियन टेरिटरीज देखिपे एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट देखो मुझे गोटे ड्र कर आप एमती ड्र करेंगे सब जिन एमती गोटे गोटे आड करेंगे देखो मुझे कौन कौन लिखी कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट ड्यूरिंग इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन गिव पावर एंड ड्यूटीज टू स्टेट सेंसेक्शन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट ड्यूरिंग पीस टाइम देखिपे एमती आप कौन करेंगे ना मुझे जानी बीडी जो मैंने भी पाठ ये करते बहुत लोक भी वर्कर लाइन थे बहुत भी मैरिड थे मैंने फैमिली सब कथा नहीं आप एमती सर्टकट पाठ पढ़ते भल लिखु आ देखो आम फंडामेंटाल राइट्स ये सब किसी पसईदेवे कारण आम कन्स्टिट्यूशन अच्छी मैंने पाठ यू जिन पसईदेवे आप सब फंडामेंटाल राइट्स लिखते पार्ट 3 रे देखो ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटाल राइट्स ऑल द इरेस्पेक्टिव और ऑफ रेस रिलीजन कास्ट और सेक्स हैव बीन गिवन द राइट टू move the Supreme Court and the High Courts for the enforcement of their fundamental rights. There are 7 category of fundamental rights. देखो there are 7 category ऊपर देखो पार्थिवे देखो एमती लिखिदेवे ओरिजिनली कन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स देखिपे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 आर्टिकल एगेंस्ट एक्सप्लोशन आर्टिकल 23 to 24 राइट टू फ्रीडम रिलीजन कास्ट 25 to 28 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30 राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 राइट टू कन्स्टिट्यूशन रिमेडीज आर्टिकल 32 बट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स by the 44th Constitution Amendment Act 1978. So after amendment it was made legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. At present there are only 6 fundamental rights. 6 fundamental rights are described below in brief. देखिपे जो सोर्स ऑफ इंडिया कन्स्टिट्यूशन मुझे बेस किसी लिखिनी मैंने आम यूके कौन आसी आम जो भारत संविधान तैयारी होगा बेले आम सब कौन कौन सब सोर्स मैंने सब नहीं आसी ये मुझे क्लीयर कर लिखी मुझे भी एत प्राक्ट भी मैंने करी मुझे एक्चुअली जहाँ करी मुझे लिखी कि ये सब हल्का एमती लिखी से आप भरी कर लिखे तो चलते आउ गए देखो आउ गए सोवरेन कर sovereign nation. The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affairs both internal and external. India is internally of externally sovereign, externally free from the control of any power of internally free from any government boundaries of any other countries. देखो एमती आप गोटे प्रियम्बल लिखी गोटे मैंने डायग्राम करदे कि डायग्राम करदे आप जल्दी जल्दी खाता भी मैंने फिलअप हो बुझे ये सब डायग्रामटा निहाती करेंगे जे से पाठ लिखु कि डायग्रामटा से भी लिखिदेवे है देखा डेमोक्रेसी ऑफ सेक्युलर पॉलिटी देखो यहाँ भी आप नोट करदे तार भितर ही सब देखो कन्स्टिट्यूशन पढ़ो मैंने ये सब आप नोट मैंने लिखिदेवे ता भितर द टर्म डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्राटिया डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल्ड बाय द पावर डेमोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच ऑल द पीपल ऑफ ए स्टेट और पॉलिटी आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग डिसीजन अबाउट इट्स अफेयर्स typically by voting the elect representative to a parliament or similarly assembly. देखो डेमोक्रेसी गोटे डायग्राम करदे डायरेक्ट डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी इंटरैक्टिव डेमोक्रेसी मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी 4टा पॉइंट लिखिदेले देयर आर 4 इंडिविजुअल लिखिदेकी रिफ्रेडेंसिज्म प्लीविलिटी रिकल इंटरएक्टिविटी देखिए ये सब लिखिदेवे आप जिते नोट किसी बनाऊँ ना आप एमती करके किसी से किसी एमती लिखिदेवे कहीं गोटे जिन देखो आम भी डेमोक्रेसी भी आधे आड करेंगे किसी भी आम भूल हेनी कहीं आम 3rd सेमिस्टर बोधे रही है सीटा कहीं मुझे निज निजर लक्ष्य करें ये सब डायग्राम करदे जल्दी जल्दी फुल हो भल मार्क मिले आ देखिपे तो 4th सेमिस्टर यूनिटी केमी लगे आपको जब क्वेश्चन पढ़ुची आप यही क्वेश्चन ही आंसर लिखु 15 मार्क हो 5 मार्क हो 40 मार्क एग्जाम हम तो भल प्रिपरेशन करूँ तो रोचे जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपण भिडियो केमी लगे निश्चित मैंने कमेंट जनइबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमी जमा भूल